Good morning, dear students. I am Madhu Shrivastava. I teach you computer subject. Dear students, before summer vacation, we had completed our chapter first. Now, after summer vacation, we will start our chapter second. Chapter second is File Management in Windows 10. Chapter 10 is File Management in Windows 10. Dear students, we will discuss about introduction of Windows operating system. Windows operating system. What is Windows operating system? MS Windows operating is an operating system. MS Windows is an operating system that controls the overall activities of the computer. MS Windows operating system is the software. It is controls overall. It is controls overall activities of the computer. It has managed to the computer all computer parts. It is interface between user and computer. MS Windows operating system has many flavors. MS Windows operating system has many flavors is called version, such as MS Windows 95, Windows 98, Windows 2000, MS Windows Vista, MS Windows XP, Linux, MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, and now today people are used to Windows 10. Dear students, Windows 10 operating system developed by Microsoft Corporation for use in personal computer. Windows 10 operating system developed by Microsoft Corporation for use personal computer like as PC, tablet and smartphone. It is used both at home and business purpose. Windows 10 operating system for use both home and business purpose. It provides you to with a GUI. ये हमें जो भी चीजें प्रोवाइड करता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है. इट यूजेस पिक्चर्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, सो you do not have learn or remember all commands. Windows 10 uses pictures for performing different operations, so do not remember any commands. You can perform a function like creating, renaming, copy and deleting files and folders just by using mouse. Windows 10 में हम जो भी चीजें अरेंज करते हैं वो any files, folder and any directories. Windows 10 में जो भी डाटा को हम स्टोर करते हैं वो किसी फाइल, फोल्डर या डायरेक्टरीज में होती है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके Windows 10
फीचर्स के विषय में बताएंगे। Dear students, now let us discuss about features of Windows 10. यहाँ पर हम Windows 10 के विषय में बताएंगे। Windows 10 is more attractive with a complete set of new pictures, themes and icons. Windows 10 is more attractive. Windows 10 desktop is more attractive and complete set of new pictures, themes and icons to create an icon. The best features of Windows 7 and Windows 8 are included in Windows 10 operating system. Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में Windows 7 और Windows 10 से बेस्ट क्वालिटीज के फीचर्स इंक्लूड हैं। It has an improved search tool Cortana which helps you to find information on system on the web. इस फीचर्स के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन यदि वेब पर सर्च करनी होती है तो उसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। Windows 10 provides a Windows Store application. Windows 10 हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। यहाँ तक कि इसमें हम कोई भी गेम या कोई भी फ्री एप्स डाउनलोड करना होता है तो हम उसे बहुत ही आसानी तरीके से स्टोर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। Windows 10 without Windows we cannot start the computer. बिना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। When we start on a computer, Windows start automatically. जैसे ही हम कंप्यूटर स्विच को ऑन करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। The first screen that appears with labeled pictures and it called desktop. जैसे ही हम कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करते ही कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोडेड लेता है एंड ए फर्स्ट स्क्रीन इज अपीयर होता है। The first screen is called desktop. Here is Windows 10 desktop screen. First, we get icons. This is called My Computer. Next, document. Document used to store files or folder. Next, icons. The small label pictures or symbol present on the desktop is called icons. The small label pictures or symbol present on the desktop is called icon. Icon used to store files and folder. Icon used to open
files and folders. Next, the long horizontal bar present on the desktop screen is called taskbar. Taskbar is a long horizontal bar. Long horizontal bar appear on the screen of the bottom. ये डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे एकदम अपीयर होता है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं. द टास्क बार डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट स्टार्ट बटन. नेक्स्ट मिडिल बटन. नेक्स्ट मिडिल बटन. एंड नेक्स्ट राइट साइड कॉर्नर is called notification area. The start button present on the bottom of left side corner. It is used to open the program. Middle button of the bar shows on the middle. You can also call quick launch toolbar. It is used to open the programs on quickly. Next, right taskbar is called notification area. It is included the clock and group of the icons. यहाँ पर हम आपको विंडोज 10 स्क्रीन के विषय में बता दिए हैं. ठीक है? Okay students, and I hope you understand to the Windows 10 operating systems. Next topic we will start next week. Thank you.